Okay, so the online ones, how many questions have you done from the sheet that I shared? How many questions have you guys done? You can tell me in the comments or you can speak out. How many questions have you done? Ajay. Wait, मैं check करता हूँ. Fourth question है, if the function y is equal to 3x square minus kx minus 12 has 0 at x is equal to 3. What is the value of k? वो थोड़ा equal to sign सही से नहीं आएगा इस जगह पे ना. Print में कुछ सही नहीं आया. उधर अच्छा आरुषि 4 questions, Anya 16 questions, Raima 7 questions. Okay, ठीक है. First 5 questions तो सबने कर लिए हैं कि नहीं? Have you reached first 5 questions? ठीक है, मैं एटलीस्ट फर्स्ट 5 पहले डिस्कस कर लेता हूँ. All of you who are there in the online class, have you guys started the sheet or not? मेरे को रिप्लाई में सिर्फ 3 लोगों ने लिखा है that they have reached any particular question. बाकियों ने नहीं लिखा. What do I assume? Okay, Rahul is doing it. Okay, Rahul, you did not attend the previous class. This is continuation of the quadratic class that I started day before yesterday. So Yes, sir. did you attend it or did you see it? No, sir, I didn't. So my exams were going. I just got over yesterday. Right. So I have the recording of that class, but somehow that is not visible in the portal. I'll be uploading it again. Okay, Okay. sir. And Yes, then sir. you can watch it. Then you can watch it. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. So first 5 questions. Let me bring those. Okay. So the first question, the answer, मैं first 5 के answers बता रहा हूँ. First question, the answer is 40. Second question, the answer is 6. Third question, the answer is 50. 50. Fourth question, the answer is 5. Fifth question, the answer is 1.8. Okay, ठीक है. मैं एक बार इनके थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ. If somebody face any problem, वो हो जाएगा. First was x minus 2x plus 2 is equal to 0. You need to figure out x square plus 10. If you remember, this is an identity, right? A minus b, a plus b. You can write this as a square minus b square. Okay? This is equal to 0. So clearly x square is equal to 4. This can be put in here and you get the answer 40. Okay, that's for the first one. Second one, a minus 3, a plus k. Just a second.
Sir, you're not audible. Your mic is muted. अच्छा, okay, right. Okay. Did you hear the previous two questions? समझ आ गए थे वो? Yes, sir. ठीक है, थर्ड से देखना शुरू करते हैं. So you've got this question: y is equal to 10 into x plus 4 into x plus 6. The roots become -4 and -6. And I told you in the previous class कि vertex पूछा हमने, तो vertex lies at exactly center of these two. तो vertex कहाँ lie करेगा? -5 पे. And vertex doesn't only have x coordinate, y coordinate भी होता है. उसके लिए you need to put -5 here in the equation itself. So y is equal to 10 into x की जगह पे you put -5 plus 4, then -5 plus 6. Then further solve this. 4 into -5 is what? -1. 6 into -5 is what? 1. ये कितना हो जाएगा? -10. Okay, understood? अब a और b वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, you'll get 50 as the answer. Clear? ठीक है. Now look at the fourth one. प्रश्न इसके बाद वाला पार्ट करना है अभी. ठीक है. y is equal to 3x square minus kx minus 12 has a 0 at x is equal to 3. 0 का मतलब क्या होता है? Root, I told you. We can put this value exactly in the equation and figure out the value of k here. So y 0 होने का मतलब है y will be 0 when x is put out to be 3. ठीक है. So 3 into 3 square minus k into 3 minus 12. ठीक है. 3 into 3 square कितना हो जाएगा? 9 3 is 27 minus 12 minus 3k is equal to 0. 27 minus 12 is 15, and on the other side becomes minus 3k is equal to minus 15. So minus minus cancels out, k becomes 5. Okay, that's the fourth question. Fourth में क्या क्या नहीं समझ आया? Repeat करूं? When we say that क्या लिखा था यहाँ पे? x has a 0 at x is equal to 3. 0 at x is equal to 3 का मतलब है जब x 3 है तो y 0 है. बस इसको पुट किया हमने, y को 0 पुट किया, x को 3 पुट किया, and then when you further solve this entire equation, okay, 5 आ जाएगा. ठीक है. And then the fifth one, if the graph of quadratic function in the xy plane is a parabola, okay, parabola that intersects at x-axis at -1.2, -1.2 and 4.8. ऐसा कुछ parabola होगा, ऐसा या ऐसा parabola होगा, ऐसा कुछ maybe. Okay, and they're asking what is the x coordinate of its vertex. ये exactly center पे lie करेगा -1.2 और 4.8 के. And we've discussed already कि आप इन दोनों को sum करो, divided by 2 करो, you'll be getting the value of x coordinate. So 4.8 minus 1.2 becomes 3.6. By 2 करेंगे तो 1.8 will be my answer. Clear? ठीक है. These are first 5. Easy. कोई doubt तो नहीं है इनमें किसी को भी? अच्छा, अभी the remaining part is to be done. वो अभी ना से maybe you can do it after the class at home, or if not today, maybe tomorrow or day after जब भी next class होगी उसके पहले. And I'll be discussing these questions in the next class. ठीक है. अब आगे का पार्ट करते हैं जो हमने करना था डिस्कस. Okay, so we discussed what a quadratic is. मैं आपको quadratic एक बारी थोड़ा सा बेसिक दोबारा बता देता हूँ. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is general form. And how do we solve this? We solve this using formula. कौन सा formula? minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. ठीक है. या फिर हम क्या करते हैं? splitting the middle term. वो भी आपने देखा लास्ट क्लास में, splitting the middle term. अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस could be asked in terms of graphs जो हमने पिछली क्लास में किया, बट जरूरी नहीं है ग्राफ ही हो. देयर आर अ लॉट मोर एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक जो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे. So let me begin with it. Okay, so when you solve a quadratic equation, ये पार्ट जो हमने डिस्कस किया था b square minus 4ac, इसको हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? डिस्क्रिमिनेंट. Okay, discriminant. This b square minus 4 is discriminant.
लेकिन डिस्क्रिमिनेंट आपको आइडेंटिफाई क्या कर रहा है इन दी इक्वेशन? व्हाट डज इट आइडेंटिफाई? इट आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, उनका नेचर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट्स वुड बी मे बी, हाँ, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, रियल के अंदर भी आर दे गोइंग टू बी रैशनल और इरैशनल, ये सब बताएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तीन कंडीशन है, या डी, इफ डी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, नहीं, इमेजिनरी, ठीक है। वाई? व्हेन यू आर सॉल्विंग एन इक्वेशन, आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिखेगी, तो डज नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट इन द स्क्वायर रूट? ठीक है, मतलब रियल नहीं बोलते ना उसको, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन उसको रियल वैल्यू नहीं बोलते, इट बिकम्स इमेजिनरी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्वायर रूट ऑफ वन करते हो सपोज इन स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव वन रखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। बट आयोटा इज समथिंग विच कैन नॉट बी पुट ऑन अ नंबर लाइन, रेगुलर नंबर लाइन पे नहीं हो सकता, इट्स नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ भी व्हेन वी हैव दिस फॉर्मूला, अंदर जो डी बनेगा मेरा, इफ इट इज नेगेटिव, इफ माई डी इज नेगेटिव, देन माई रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि ये आयोटा बनेगा, ठीक है। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप मुझे बताओ इस बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो चलो आपको पता चल जाएगा, इसके रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा? पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। जीरो बन रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो जीरो होने से रियल एंड इक्वल बनेंगे। व्हाट आर द रूट्स? व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? 2, 2 एक ही रूट है, बेसिकली दिस इज x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली रूट विच इज एग्जिस्टिंग ट्वाइस, इसीलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। आपको अगर पिछली क्लास से याद हो, इसका ग्राफ 2 पे जाएगा, मैं बताया था ना, अंदर नेगेटिव हो रहा है तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा ग्राफ, ठीक है। d is equal to 0, roots are real and equal. d greater than 0, again there are two conditions. d can be a perfect square or d might not be a perfect square, ठीक है। d can be a perfect square, d might not be a perfect square. If d is a perfect square, the roots are real and rational, and इस केस में roots are real but irrational. What do you understand by irrational? रूट में एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, ठीक है, रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, so x square minus 3x plus 9 is equal to 0. What are the roots of this equation? आयोटा आ रहा है, अच्छा हाँ, नेगेटिव आएगी इसमें, अच्छा ये नेगेटिव बन गई ना, वेट, इसको कुछ उल्टा करते हैं, ये बेसिकली इमेजिनरी रूट बन गया, ये कर लो। अरे ये 3 है, मतलब दिस इज वॉबलिंग, माई पेन इज वॉबलिंग, मैं 3 लिख रहा हूँ लेकिन ये सेंटीग्रेड बन रहा है, ठीक है।
रियल एंड इरेशनल आ रही है। क्या रूट्स आ रहे हैं? निकाले नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकाला सिर्फ। रूट भी निकालो एक बार। जब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया तो और तो काम है ही नहीं इसके अंदर। 9 प्लस यही है रूट्स। तो द पर्पस ऑफ गिविंग यू दीज रूट्स वाज कि आप देखो ये इस फॉर्म में आते हैं कि यहाँ एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है बाकी सब सेम है। ठीक है, ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ कॉन्जुगेट पेयर। वी कॉल इट अ कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, in fact when you draw roots for a e less than 0, उसके लिए जब आप रूट्स निकालोगे इमेजिनरी रूट्स, देन ऑल्सो यू विल गेट अ कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, और कॉन्जुगेट पेयर कैसे पता चलेगा? यहाँ बैठ जाओ, उधर उधर बैठ जाओ। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ कॉन्जुगेट पेयर? कि एक साइन प्लस होगा माइनस होगा बाकी सब सेम, यानी कि वी कैन हैव a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी। ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ पेयर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। इनफैक्ट अगर आपका जो आपने पिछला क्वेश्चन करना शुरू किया था x² माइनस 3x प्लस 9, जिसके अंदर यू वर सेइंग दैट रूट्स वर इमेजिनरी, उसमें भी जब आप रूट्स निकालोगे एक्चुअली इट विल कम आउट समथिंग लाइक दिस: a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो टू अंडरस्टैंड इट इजीली, याद रखने के लिए, कॉन्जुगेट कैसे याद रखोगे आप? कॉन्जुगेट पेयर हस्बैंड वाइफ समझो, ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, सो एनीबडी कुड बी पॉजिटिव, एनीबडी कुड बी नेगेटिव। अब एक्चुअली भी कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेशन यूज होता है बायोलॉजी में। अभी कॉन्जुगेशन टर्म का यूज होता है? नहीं पता है, कभी नहीं सुना कॉन्जुगेशन। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं या वायरसेस होते हैं, हाउ डू दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन? हाँ, स्प्लिट। इज दैट द ओनली वर्जन? स्प्लिटिंग से ही होता है। हाँ, ओके, एनी अदर वे आउट दैट यू स्टडीड? अच्छा आप ये बताओ, जो एनी अदर लिविंग स्पीशीज दैट यू हैव, बी इट ह्यूमंस बी इट एनिमल्स, मैमल्स स्पेसिफिकली, तो उनके अंदर मैमल्स में बर्थ होता है आगे, है ना? तो दैट्स हाउ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, जो मैमल्स नहीं है उनमें एग्स होते हैं, एग से आगे पॉपुलेशन बढ़ता है। बैक्टीरिया में कैसे बढ़ता है? दैट्स वन ऑफ द वेज दैट ही टोल्ड की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजन। ठीक है, इट्स कॉल्ड फिजन। हाँ, बर्डिंग होती है, वो फिजन ही हो जाएगा, बर्ड होने के बाद भी फिर वो फिजन ही होता है उसका। ठीक है, दैट्स फिजन। बट देयर इज अनदर मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, नॉट इन वायरसेस बट इन बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब कि एक बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरिया दिल कम इन कांटेक्ट। ऐसे एक बैक्टीरिया है, there's another bacteria, they'll come in contact. How do they come in contact? यहाँ बर्डिंग यहाँ भी होती है, यहाँ भी एक बर्ड निकलता है, and these birds merge with each other. ठीक है, and they pass on their genetic material from one bacteria to the another. और जेनेटिक मटेरियल नया निकलने के बाद तभी तो जब बैक्टीरिया एप्लीकेट करते हैं विद न्यू फीचर्स, तो होता क्या, जैसे जैसे लेट्स से अ बैक्टीरिया फ्रॉम वन स्पीशी ऑफ एनिमल्स, बैक्टीरिया फ्रॉम अदर स्पीशी ऑफ एनिमल, दे मर्ज टुगेदर, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जब मिक्स होता है तो एक नई नई बैक्टीरिया स्पीशीज निकलती है जो आगे जाके दोनों को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग हो रही है इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो लिटरली कॉन्जुगेशन में ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया
since genders are not defined, तो these are husband wife without genders. ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्जुगेट पेयर जो है आप ऐसा समझो हस्बैंड वाइफ है, एक प्लस साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इन दैट. ठीक है, ओके. सो ये कॉन्जुगेट पेयर कहाँ होगा? एक तो इररेशनल में भी होगा और ये जहाँ इमेजिनरी रूट्स है वहां पे भी होगा. और इसकी और एप्लीकेशन क्या है कॉन्जुगेट पेयर होने की? इफ आई जस्ट गिव यू वन रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, जैसे इफ आई टेल यू दैट 5 plus root 3 is one of the roots of an equation, what is the other root? Understood है? Understood है, ये 5 minus root 3 is the other root. ठीक है. Now what will happen if I know both the roots of the equation? Move ahead. Let's say one of the roots is 5 plus root 3. One of the roots, obviously दूसरी रूट क्या होगी फिर? ए बी की बजाय इसको अल्फा बीटा बोल देते हैं. How do you create a complete quadratic equation? X minus alpha into x minus beta. That's one way. या आपको मैंने बताया था कि आप sum of roots निकाल सकते हो, product of roots निकाल सकते हो, and then you can use x square minus xx plus p is equal to 0. This is something that you can use. ठीक है, तो sum क्या होगा इन दोनों का? 5 plus root 3 plus 5 minus root 3. What will be the sum? Cancel this out. 10. What will be the product? This is a plus b, a minus b. A square minus b square. 5 square minus root 3 square. 25 minus 3, 22. So what does the equation become? X square minus sum is 10. Okay. So you see the application of being a conjugate pair. Okay. Just by knowing one root of the equation, you can find out the other root of the equation. Clear? कोई डाउट इसके अंदर? डन? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो, लेट मी गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ. ये नोट डाउन अगर कर लिया तो आगे चलते हैं. डन? नोटेड एवरीवन? कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं. Find its roots. Find roots. Nature of roots. When I'm asking nature of roots, you just need to tell me whether they are irrational, rational, negative, positive. Sorry, negative नहीं. Rational है, irrational है, real है, imaginary है, क्या है? वो nature बताना है. ठीक है? Okay, so you've got these 5 questions. ठीक है? Solve them quickly. Very easy ones.
Done with all five? Do it, do it, do it. हो गया कि नहीं?
लास्ट में रूट्स आ गए, अगर रूट्स आ गए तो के निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है ना, सी बाई ए होता है। ठीक है अन्य, पहले का आंसर क्या है? -2 एंड -9/2, यही आया सबका यार। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ इसको। You've got 2x² plus 3x plus 18 is equal to 0. So you need to figure out the value of two numbers जिनका प्रोडक्ट बने, देख लो ध्यान से, जिनका जिनका रूट नहीं हुआ था सॉल्व, जिनका प्रोडक्ट बने 18 2 36 और जिनका सम या डिफरेंस बने 3। व्हाट आर सच नंबर्स जिनका प्रोडक्ट बने 36? हाँ, 4 and 9, डिफरेंस तो नहीं बन रहा है। 18 2 36, 4 and 9 का डिफरेंस, अच्छा ये 3 नहीं था 13 था, सॉरी मैंने गलती गलत लिखा हुआ, ठीक, इट्स 13x, अब बन जाएगा 9x। ठीक है, सो यू गॉट 2x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले सकते हो आप, x प्लस 2x नहीं, सॉरी x कॉमन ले सकते हो आप। we will have inside we'll have 2x plus 9 प्लस यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हो, you can take 2 कॉमन and you have 2x plus 9 again। दोनों में से combined common we can have 2x plus 9, x plus 2 is equal to 0, so x is -2 or -9/2। ठीक है, these are the two roots of the equation, understood? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, x² plus x minus 12, correct। So you need to figure out two values जिनका प्रोडक्ट बने 12 और जिनका सम या डिफरेंस हो 1। ठीक है, हाउ डू वी डू इट, x² plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0। You can take x common, it's x plus 4 minus 3 common, x plus 4 is equal to 0। नहीं, ये x minus 4 होगा ना, हाँ नहीं, प्लस ही होगा। When you take common, x plus 4 common, x minus 3 common, x is equal to -4 और 3। ठीक है, these are the two roots of the equation। Clear everyone? थर्ड है 8x² minus 2x minus 4। You just need to figure out the nature of roots of b square, यानी -2 का स्क्वायर, -4 into a into -4, तो -2 का स्क्वायर 4, दिस इज माइनस माइनस प्लस, 8 4 32 4 whatever it is, मतलब मेरे को दिख रहा है 4 प्लस समथिंग, इट्स गोना बी पॉजिटिव वैल्यू, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। और डी जब पॉजिटिव, अच्छा 128 आ रहा है, 8 4 32 4 32 4 128, yes, so 132 we get, 132 is not a perfect square, ठीक है, but it is greater than 0, so roots are real and irrational। ठीक है, roots are real and irrational। ठीक है, ओके, विल मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। मैं लिख लेता हूँ एक बार, दोबारा लिख रहा हूँ। सो यू हैड r(x² plus 5x minus 24, इसमें सम ऑफ रूट्स बोला है 5/11, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। सम ऑफ रूट्स क्या निकलता है, -b/a, सो -5/a इज r हियर, r होगा ना यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 5/11, you can figure out the value of r from here, -11, ये कैंसिल हो जाएगा, r becomes -11, and when you're finding product of roots is c/a, c is -24 यहाँ से, and a r आएगा, the answer becomes -24 by -11, minus minus cancels, 24/11 is the answer। ठीक है, for the fourth question। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया था मैंने, 6x² minus 12x minus k is equal to 0, roots are reciprocal, k की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्या रहा आंसर इसका, -x, -x। To figure out k, I need to figure out product of roots, right? Product of roots
इज इक्वल टू सी बाय यानी माइनस के डिवाइडेड बाय 6, है ना। अब क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, अगर एक रूट अल्फा होगी दूसरा रूट 1 बाय अल्फा होगी, देयर प्रोडक्ट बिकम्स 1, सो के बिकम्स -6। ओके, 1 इज इक्वल टू माइनस के बाय 6, के बिकम्स -6। क्लियर, ठीक है, इजी है। ये इक्वेशन है। दे सेड रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, अगर एक रूट अल्फा है दूसरी 1 बाय अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे, प्रोडक्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरे को के फाइंड आउट करना है, के सी वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये सी वाला हम प्रोडक्ट में यूज करते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, और ये माइनस के बाय 6 दिया है, सो अल्फा अल्फा कट गया, सो माइनस के बाय 6 बिकम्स 1, सो के बिकम्स -6। ओके, अंडरस्टूड। एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 plus 4 plus root 7 is one of the roots of an equation. Find the equation. Next, x square minus kx plus 243 is equal to 0 if roots are alpha and 3 alpha. Find positive value of k. Next, x square minus 3x minus 180 is 0. Roots are alpha beta. Find alpha square plus beta square. 1 by alpha plus 1 by beta. बस ये करो, this and this, ठीक है। You do these 3 questions.
Are you done? All three? Sure. Okay, so this was the first root is 4 plus root 7. The other root would be 4 minus root 7. So sum of roots would be 8. दोनों का आप ऐड करोगे root 7 कैंसिल हो जाएगा. Product of roots will be 4 square minus root 7 square. यानी 16 minus 7 which is 9. तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x square plus 9 is equal to 0. ठीक है. सेकंड में if the roots are alpha and 3 alpha find positive value of k. अच्छा k मिसिंग कहाँ है? सम ऑफ रूट्स में मिसिंग है ना. ठीक है. सम ऑफ रूट्स क्या होता है? वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट से वी कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c by a and c is 243 over a1 and this is equal to alpha into 3 alpha, right? So 3 alpha square is equal to 243. Alpha square will be 243 divided by 3. कितना आ जाएगा? 81. Alpha would be plus minus 9. अब सम ऑफ रूट्स बोला उन्होंने, तो एक रूट हो जाएगा आपका 9, दूसरा रूट हो जाएगा 3 अल्फा यानी 27. मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं बिकॉज़ दे सेड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k बताना है. तो 9 plus 27 36 आ जाएगा. और सम ऑफ रूट्स क्या होता है? वैसे बेसिकली k निकालना है ना मेरे को. इट्स k सॉरी माइनस b by a. Minus of minus k by a is 1. So k is equal to 36. ठीक है. अंडरस्टूड. अब इसमें रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है. अच्छा आप अल्फा बीटा रूट्स निकालने मत बैठो. यू डोंट हैव टू फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना. वो करा जा सकता है लेकिन उससे इजी वे आउट वुड बी, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन डाउन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha beta. This is sum of roots. नहीं ये this would be minus क्योंकि we have alpha square बीटा square plus 2 alpha beta, उधर जाके minus होगा, minus 2 alpha beta. So sum of roots का square, sum of roots आपको देख के पता चल जाएगा यहाँ से. Sum of roots is 3, 3 का square minus 2 alpha beta. Product of roots is minus 180. ठीक है. ये हो जाएगा 9 plus 180 into 360, 369 हो जाएगा. ठीक है. इसको भी जब आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा कैन बी टेकन एज एलसीएम और ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा. सो ऊपर सम ऑफ रूट्स है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. सम ऑफ रूट्स आपको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑलरेडी पता है. ठीक है. माइनस माइनस 3 बाय अच्छा 1/60 आ जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. माइनस 1/60 माइनस 3 बाय 180 है विच इज माइनस 1/60. अंडरस्टूड. ठीक है. अच्छा दीज वर रेगुलर प्रॉब्लम्स. नाउ लेट्स हैव अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम. क्वाड्रेटिक में स्टेटमेंट प्रॉब्लम कैसा हो सकता है?
You write down if the price of each book goes up by ₹5 या $5, whatever. Then Alex can buy 20 books less for ₹1,200. Rupee, dollar, whatever currency is written there. Okay? 1,200. Find the original price and number of books Alex can buy. ठीक है?
ऑनलाइन हो गया कि नहीं? हो गया, डन। काइंड ऑफ करें डिस्कस इसको, कर लें। देखो दो, देयर आर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हियर, वन इज प्राइस एंड द अदर इज क्वांटिटी, राइट? नंबर ऑफ बुक्स और क्वांटिटी, एंड प्राइस इनटू नंबर ऑफ बुक्स और क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं वुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट? दिस वी ऑलरेडी नो। लेट्स कॉल दिस टोटल कॉस्ट को सी बोल देते हैं हम लोग। Now what they're saying is, if price of each book goes up by ₹5, P plus 5, then Alex can buy 20 books less, Q minus 20 हो जाएगा for ₹1200। इसका मतलब C is 1200, right? C 1200 ही है। I know PQ का वैल्यू जो है वो 1200 ही है। PQ is equal to C is equal to 12, ठीक है? Now we'll solve this like a quadratic। क्या बनेगा ये? PQ minus 20P plus 5Q minus 100 is equal to 1200, ठीक है? PQ की वैल्यू we already have the value, right? Minus 20P plus 5Q minus 100 is equal to 1200. 1200 gets cancelled out, right? So what do we have? We can write down 5Q minus 20P is equal to 100, ठीक है? अब one way of solving this is कि हम जो हमने इंटेग्रल सॉल्यूशन लीनियर में किया है उसको यूज करें। The other way is PQ is 1200. You can write down any one variable as 1200 by P, या P is equal to 1200 by Q, and then you put it here, and then you'll get the quadratic. Okay, so 15 into 1200 by P minus 20P is equal to 100, and then you further solve this. This is P, 15 to 1200 बहुत बड़ा हो गया वैसे ये। We could have simplified this somewhere. हाँ, अच्छा 5 है, सॉरी मैंने तो ये अच्छा बॉक्स बनाया हुआ, नहीं तो 5 है। 6000 minus 20P square is equal to 100. So when you solve this further, 6000 minus 20P square is equal to 100P, or 20P square plus 100P minus 6000 is equal to 0. And then you solve this quadratic by taking 20 common. 20 common लेते हैं. What are we left with? P square plus 5P minus P कितना हो जाएगा? 30 is equal to 30, 300, sorry, 300 is equal to 0. Now you need to figure out two values जिनका sum या difference 5 बने और product 300 बने. 20 and 5. We have P square plus 20P minus 15P is equal minus 300 is equal to 0. Okay. Then you further solve this, P comes out to be 15. If price is 15, using quantity wala equation, this equation you can figure out the quantity is 80. Okay. Understood? So it can be done with the mathematical also now, like we can take one variable as 100 and then You can. Clear? Done? Okay. अच्छा, इसके बाद वैसे quadratic, otherwise almost all the types of questions are done. बस इसमें there is a factor theorem and a remainder theorem, which is not specific to quadratic. It is for every polynomial. ठीक है? Remainder theorem and factor theorem, it's for every polynomial. तो पर हम quadratic के साथ ही कर लेते हैं, ठीक है? So in the next class, I'll do the remainder theorem, factor theorem. Along with that, quadratic के जितने questions आज मैंने आपको देखे जो बच गए, plus a few more questions for practice, and then we'll be done. ठीक है? चलो. अच्छा, अभी आपकी second class जो मैम की थी, so मैम is not well, so she's not come. उसकी जगह पे फिर अभी सर क्लास ही लेंगे, कंटिन्यू करें what he was doing. ठीक है? Online ones you join after 10 minutes. Okay? yeah.